Oh, I am so comfortable with repetitive routine. I can be boring like nobody else. Like मेरे लिए बहुत एनर्जी सकिंग होता है उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो जिंदगी में सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं. जो है सही है कहाँ कोई Hello, welcome. We've been waiting for this moment since weeks actually, and finally we are here. To be very honest, right before this, we switched from Zoom to Google Meet, and because of that, मतलब एक मिनट तो बीच में जो हमको मिला, I was literally like, did this just really happen? Yeah, I I know. fumbled a lot. I'm fumbling right now also. And did we actually talk to Ankur? But no. I finally pinched myself enough to believe it now. So you really don't need an introduction. So this is not going to be a podcast where we are going to ask you any professional questions or personal questions. We have very interesting set of questions for you. But more than that, we have a goal that at the end of 30 to 40 minutes, whatever we take to have this conversation, we want to make a song for you. A song that is for you, about you, and made with you. So, of course, right now we're just going to crack the title and the hook as much as possible, and then later on we'll extend the song. So, our first question to you is very simple. A few weeks back I saw this video of yours which said that social media scrolling numbs you. So, whenever you are bored, you tend to scrolling when you don't know what to do in that moment. So, do you really feel that excessive information in this world is getting problematic for our psychology as well as our routines these days? 100% यार. इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दुनिया में इससे पहले कभी था नहीं. एंड ऑन अ डेली बेसिस पीपल आर कंज्यूमिंग एज मच कंटेंट एज somebody 200 years back would consume in their entire lifetime. तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू क्रिएट डिसोनेंस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी तो फोमो जनरेट हो जाएगा. यूल बी लाइक ओ माय गॉड, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रही है, वो वैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया है. एंड इट जस्ट messes with your mind. So it just becomes like a really bad spiral to get into. So, and there is a very interesting dialogue from True Detective which says that human consciousness is a tragic misstep in evolution. So, by the human consciousness is actually very unnatural and it should not exist by the nature of law. So, I think that is where we are going. जो कलयुग की बात है ना, वो अभी right now we have separated, our consciousness has separated ourselves from the nature, and because of that we are starting, because अभी कुछ भी करें, to be very honest, recently अगर मेरी बात करूँ तो I want to ask you if this happens with you. For example, let's say gratefulness. When I try doing my prayers, when I try being grateful, even that has become transactional. बिकॉज आई एम सो सेल्फ अवेयर ऑफ माई ग्रेटफुलनेस दैट ये मैं मांग रहा हूँ तो उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, फिर मेरे साथ ये अच्छा होगा, फिर ये होगा. I can't avoid that chain of thought. Does this happen to you that you want to be unconscious towards, do you want to do some few things subconsciously, but you are not able to? यार मैंने ना मांगना बंद कर दिया. एंड मे बी इट हैज़ गॉट टू डू विद एज, क्योंकि एक उम्र में आके, आई एम 42 years of age, यू रियलाइज़ कि यू शुड स्टॉप आस्किंग. क्योंकि दुनिया में और ज़िंदगी में इतना ऑलरेडी मिल चुका है. एंड एटलीस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गॉट, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, रुतबा, पैसा, प्यार, वो हर एक चीज़. दैट it'll be stupid and foolish and selfish of me to continue asking because मैं अपना कुछ दे रहा हूँ. So I'm a student of routine, I'm a student of habit. मुझे जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है उस चीज़ को मैं करता रहता हूँ. And my life has told me कि उस आदत और उस routine से you start reaching goals that you could not have decided for yourself when you started. So do you find comfort in repetitive routine? Oh, I am so comfortable with repetitive routine. I can be boring like nobody else. And I'm totally okay with that. Like मैं रोज़ सुबह उसी समय उठूँगा, मैं रोज़ वही नाश्ता करूँगा, मैं रोज़ वही चीज़ें करूँगा, और मेरी ज़िंदगी में कोई बोरियत नहीं आती है. I do not know what it is to get bored in the sense of bored with the routine.
and that I believe is one of my superpowers. how to get this? ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिलती है जड़ी बूटी? ये yeah, ये ना the thing is हमारी एक बहुत एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट ट्रेट था ऑफ हैबिट जो हमने कहीं घुमा दिया एंड द एवोल्यूशनरी ट्रेट इज कि हमारा जो दिमाग है उसका सिर्फ एक ही काम है कि सबसे कम से कम एनर्जी डिस्पेंस करके अपना काम कर लो, जितना भी कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी कंजर्व करना है. एंड दैट्स वाई हैबिट्स वर्क. जब हम like if I were to ask you what are a few routine habits you have in your life, so you'll be like, no, brushing your teeth, taking a shower every day, maybe eating, maybe scrolling the internet, maybe wishing good morning to your family, कुछ भी, right? These are routine habits. And you realize कि ये आदतें इतनी हमारी ज़िंदगी में जड़ गई हैं that we don't even think twice before doing it. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग उठते हैं और ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन उठा लेते हैं. दैट्स अ हैबिट. फिर वो बाथरूम में जाते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रश करना शुरू कर देते हैं. इट्स लाइक अ हैबिट. वो फिर पॉट पे बैठते हैं और अपने फ़ोन को लेके उसी पे बस जाते हैं. दैट्स अ हैबिट. तो ऑल ऑफ दीज मेक इट सबकॉन्शियस फॉर यू टू गेट थिंग्स डन. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आजकल के डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में हैबिट फॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज द राइट हैबिट्स, बुरी आदतें तो बहुत आसानी से लग जाती हैं, बहुत आसानी से, लेकिन अच्छी आदतों के लिए बहुत फाइट मारनी पड़ती है. बट द ब्यूटी विच पीपल आर अनेबल टू सी इज कि जब अच्छी आदत लग जाती है ना, तो वो भी सबकॉन्शियस हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट डूइंग इट. इट जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली. Correct. Nice, nice, nice. Oh, I'm so sorry. This is actually our first podcast कि इतना जल्दी मुझे melody आ गया. Usually we crack a melody around 20 minutes or 25 minutes. So I'll just take a quick minute to record that. So it goes something like वही बात, वही रात, फिर से जी लूं. वही बात, वही रात, फिर से मैं जी लूं. वही दिन, वही साथ, फिर से मैं जी लूं. फिर एक बार ना 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 ना. And repeat once more. वही बात, वही रात, फिर से मैं जी लूं. ना 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 ना. Okay, nice. We have one option now. So Very nice. बस ऐसा हमारा बीच में चलता रहेगा. To be very honest, I have recently realized, now this is a very subconscious decision that happened in my life, कि by forcing myself into such pressure situations कि जल्दी से ट्यून बनाना है, I've stopped thinking too much about it. You know, ये कैसा, किसी को कैसा लगेगा, मेरी मम्मी सुनेगी तो कैसा लगेगा, मेरी गर्लफ्रेंड सुनेगी तो कैसा लगेगा. जब वो सारे फिल्टर्स निकल गए हैं ना, so to be very honest, I feel more connected to the music, and that is how any piece of art form should be. So it's technically working for me. I never knew that pressure would work for me. So ऐसी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे pressure somehow works for you, or deadlines work for you? I think not so much deadline. The routine works for me, and the routine by itself is like a subconscious pressure. एक मुझे पता है कि मुझे इस दिन, इस हफ्ते, इस महीने ये करना है एंड ये रिपीटेडली करना है. तो दैट देन बिकम्स सच अ रिदम कि दैट जस्ट वर्क्स फॉर मी. बट अदरवाइज मैंने ज़िंदगी में प्रेशर लेना बंद कर दिया है. तो आई डोंट फील द प्रेशर ऑफ गेटिंग एनी थिंग डन, बट द जॉय ऑफ जस्ट रिपीटिंग थिंग्स इट सेल्फ इज लाइक अ प्रेशर इन सम सेंस. Okay. What are your methods of gratefulness? How do you feel gratefulness? Do you have any routine to that, attached to that? I don't have a routine. I just am perpetually pinching myself. I'm perpetually pinching myself. Like I know it sounds like very cliche और बहुत socially desirable answer है, लेकिन I am constantly surprised how many people know of me, how many people think I help them, how many people think I have done something to add value to their life. Because मेरे दिमाग में I'm just a guy doing my thing.
I'm not big in my head. मेरे दिमाग में I'm just a guy sitting in front of a camera with a mic, having gone through experiences in life and just repeating that. तो मुझे बहुत 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 सरप्राइज होता है whenever somebody comes and says सेल्फी खिंचा ली है या दिस इज़ हाउ यू हेल्प मी, वो वीडियो आपका अच्छा था, मैंने आपकी वजह से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ब्ला 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 ब्ला। It is just unbelievable. So I live in perpetual gratitude, and that's something that I often say to my wife as well, and thankfully both of us are aligned कि हम That should actually be the title of your next book, Perpetually Pinching Myself. I would love to do that. Because that is exactly what you said, and the tagline is also perfect. जो आपने बोला कि I know it sounds very socially desirable, but it is true for me, and I guess it should be. It can be true for everyone. Yes, exactly. Do you believe in luck by any chance? I believe in luck, yaar. I majorly believe in luck. But I also believe that luck can be made to work for you. And there is a concept of surface area of luck, which is something which I'm passionate about. Ki luck is basically probability. जब तुम बोलते हो कि तुम लकी हो कि नहीं, it basically says कि probability of एक ऐसी चीज़ जो तुम चाहते थे उसकी probability क्या है, क्या वो ज़्यादा है, कम है। And because I am a science student, I know how probability works. कि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का उछालोगे और बोलोगे कि यार हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो अगर तुमने टेल्स बोला और टेल्स आ गया तो लोग बोलेंगे अरे तुम लकी हो, ओके फाइन। लेकिन अगर मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा और तुम बोलोगे कि यार एक बार टेल्स आना चाहिए, तो सडनली उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। While the actual luck/probability of a tail coming on every toss is 50%, but the probability of a tail happening in 10 tosses is a lot more. And the same way, अगर तुम एक इंसान को बोलोगे यार नौकरी दे दोगे, तो उसकी probability शायद 10% है। लेकिन अगर तुम 10 लोगों से नौकरी मांगोगे और क्या उसमें से एक इंसान तुम्हें नौकरी दे देगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% से बहुत ज़्यादा है। एंड दैट सडनली फील्स लाइक अरे तू तो लकी हो गया। सो दैट्स हाउ आई थिंक ऑफ लक। True. But do you think the concept of luck, जो उसके around जो भी mystery, magic attached है अभी right now, that it is a mysterious power that works in mysterious ways, it should be protected that way because that somehow helps in subconscious manifestation for you. Sometimes when you can't find hope, चलो यार लक आ जाएगा, आई कैन बी लकी, थोड़े सुपरस्टिशंस ले लिए, थोड़े आई थिंक मेरी लकी टी शर्ट मैंने पहन ली तो मैं लक वर्क कर जाएगा। इफ दैट इज ट्रू फॉर सम पीपल, डू यू थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी लॉजिकलाइज्ड? उसको लॉजिक देना ज़रूरी नहीं है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड एज अ मिस्ट्री एंड मैजिक। I think there is a big difference in my life between luck and hope. Hope is what you are referring to according to my definition. Am I hopeful? I am constantly hopeful. और वो होप बहुत सारी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है। नो आई होप कि आज मैं अच्छा खेलूँ, आई होप कि आज मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ, आई होप कि आज मैं अच्छी चीज़ें बोलूँ, आई होप कि मेरे को अच्छे लोग मिलें आज। ऑल ऑफ दैट इज़ hope, and I am a strong believer in hope. But luck for me, maybe because of my bias, luck for me is a mathematical instrument. तो मेरे लिए luck को hope में convert करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे बस ये लगता है यार luck को तो मैं orchestrate कर सकता हूँ, and फिर उसके बाद it is just about being lucky. Right. What I'm getting out of this is the more lucky you want to get, the more opportunities you try to kick in. बिल्कुल यार, पूरी चीज का सार यही है। Higher the n, higher the probability of you getting it. Higher the n, higher the probability. Right, बिल्कुल। I've also seen you complaining about a lot of people who complain. Yes, ironic.
Yes. So I think the internet थोड़ा problem हुआ, but yes. So I've seen that you in through your memes, through your videos, you complain a lot about people complaining. Yes, ironically. When people are investing in FDs, people are investing in some very basic investment options which could have been smarter decisions if taken consciously. So do you think that ये जो complain करना है about people complaining is does that work when you do it in person? या फिर people usually Yeah, retaliate? absolutely. नहीं तो there is it's not about complaining against people who complain. I genuinely do not like to spend time with people who complain. Period. Like मेरे लिए बहुत एनर्जी सकिंग होता है उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो ज़िंदगी में सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं, यार ये नहीं है वो नहीं है. एंड कंप्लेन कुड बी वेरी वेरी ट्रिवियल, लाइक कि कंप्लेन कुड बी अरे विराट ने इस बॉल पे चौका क्यों नहीं मारा, इतनी लॉलीपॉप बॉल थी, क्या बेकार खेलना नहीं आता, ये सब अच्छा हुआ कैप्टन नहीं है, टू समथिंग लाइक कि अरे मेरा मैनेजर ऐसा है छोड़ दूंगा नौकरी और नहीं करनी ये सब, गुलामी, ब्ला ब्ला ब्ला. You're basically, here's what happens when you complain. When you complain, you transfer the responsibility of your condition to somebody or something else. You basically are telling the universe कि जहाँ मैं हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, किसी और की भी है. And you get the ability to transfer that accountability. And I am not that person. I am a very, very accountable person. मैं ज़िंदगी में ये मानता हूँ कि जहाँ मैं हूँ उसकी पूरी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डिसीजंस की है. सो आई बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजंस 100%. And that's what I often tell my kids as well, that whether life works out for you or not, do not ever find yourself blaming somebody else. That doesn't mean you have to blame yourself as well. It just means you always have to bear the consequences of your decisions. Yeah. Yes. So actually, that is a very interesting affirmation mantra that you should have. That whenever I am, trying to make any kind of affirmation or I'm trying to, be grateful for something, I'm really happy that what I've got, and I take full responsibility of it. That is actually something that builds more confidence over time. Yeah, exactly. That's so true. But do you think we write our own, as you said, it is the probability game. But do you think if there were to be a book or there were to be some timeline, whatever you call it, maybe जहाँ पे सब कुछ कहीं ना कहीं register हो रहा है, the entire timeline is getting registered of the universe. Do you write that yourself? Do you write that with your own actions? Do you alter that with your own actions? Very hard to say, yaar. Very, very hard to say. I'd like to believe the answer is yes. But I also recognize कि बहुत सारी चीज़ों को तुम प्लान नहीं करते हो, लेकिन सही वक्त पे सही जगह पे वो तुम्हारे लिए काम कर जाती है. I'll give you a simple example. मैं साइंस स्टूडेंट था और हर साइंस स्टूडेंट का इस देश में फ़र्ज़ बनता है कि वो IIT JEE का एग्ज़ाम दे, तो मैंने भी दिया और नहीं हुआ. एंड क्योंकि मेरा IIT JEE में नहीं हुआ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैं हिंदू कॉलेज गया और वहाँ मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ मिली. एंड शी इज़ frankly one of the best things to have happened to me because of how the two of us work with each other. Now I don't know what to call it. कि मैं अगर मेहनत करके IIT चले जाता तो क्या वो मुझे मिलती? शायद नहीं. और क्योंकि मेरा IIT में नहीं हुआ, जो मुझे लगा था उस पॉइंट पे was like the worst thing to have happened to me in my life, उसकी वजह से मुझे मेरा लाइफ लॉन्ग पार्टनर मिला, which was a far more important decision than going for that 4 years of IIT degree. तो क्या वो important था? And did I actually do something to make it happen? And the answer is no, I didn't. In fact, I was trying to make the opposite happen, which is I should not find her. And yet I found her.
So I don't know how these things work, and I frankly don't even try and reason it out. I think life has a beautiful way of working out for everyone. I do believe in science. I really believe in science. और मैं अक्सर अपने दोस्तों को और अपने परिवार को बोलता हूँ कि if you can hear the science, then I think the universe is always trying to tell you what you could do. Correct. Right. So what I'm trying to, after this entire conversation, मुझे ये चीज़ दिमाग में एक philosophy दिमाग में बैठ रही है कि usually कोई भी song होता है, कोई भी movie होती है, it's like कि you write your own destiny. You complain about, be always positive, complain about complaining people, and ये करो वो करो. But what if we make a song जहाँ पे I don't know, ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है. Like writing your destiny, it can be true, it cannot be true. But complaining about complaints, it can be true, it can be good, it can be bad. I don't mind. But right now, the routine that I'm living in is something that is very giving to me, And it's true for me. And it's true for me. So I think this is how it is. जो है सही है. In that way, I think ये philosophy मुझे crack हो रही है. Like somewhere where we are not trying to tell people कि ये करो, ये करो, ये करो. नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. Find your own destiny. I found mine. जो है सही है. And the way to find your destiny is the same thing that you also believe, that जो है सही है. So I think जो है सही है is sticking with you. We can try something around that, which is na 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 na. No wait. जो है सही है na 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 ra ra. जो है सही है, कहाँ कोई कमी है. जो है सही है, कहाँ कोई कमी है. जो है सही है, कहाँ कोई कमी है. किस्मतें क्या खुद की मैं लिखता, किस्मतें क्या खुद की ना बे किस्मतें क्या खुद की मैं लिखता हूँ. शिकायतें क्या शिकायतों की क्या करता हूँ. Something like that, something like that. But these are placeholder lyrics, something like this. But something very interesting is turning out. But I like this जो है सही है. I know. Even the previous one that we tried, that was ये also- पल ये रात, yes. that is also very nice. We can connect this somehow. But you want to make a very, very, have you heard the song Aajkal Zindagi from Wake Up Sid? Yeah, we बहुत are अच्छा. thinking of something like that. I am at peace, I am at solace, and I love my routine. And somehow, honestly, we got the same answers from you, and somehow we found that अभी हमको जो ढूंढना है वही सुपर पावर हमको भी लाइफ में ढूंढना है. That very soon we also achieve this कि ये जड़ी बूटी मिल जाए हमको भी कि we are happy in our boring routine. To be very honest, boring as per the people, but it is interesting to us. The discipline interests us. So do you believe in the concepts of discipline to be hammered onto the students or children from the very early age on, or do you think they should discover it on their own? यार I'm a firm believer कि discipline automatically उन चीज़ों से आता है जिन चीज़ों को करने में तुम्हें मज़ा आता है. You only require discipline to do things that you don't want to do. Nobody says कि अरे यार 15 मिनट ज़्यादा सोने का मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है. सब सो लेते हैं, सडनली वो डिसिप्लिन आ जाता है. यार मेरे पास वो ना एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाना है लेकिन डिसिप्लिन नहीं आ रहा है. Everyone suddenly has discipline when it comes to the things that they shouldn't do, or they don't want to do. So I am a firm believer कि consistency ज़िंदगी में तभी आती है जब authenticity आती है. For example, look at what you guys are doing. Does it require discipline to do it 100 times and do it with the intensity and the passion that it does? Of course, yes. Like to me, what you guys are doing sounds like a lot of work. But I am very sure at your end, it's a lot simpler than how I see it. क्योंकि for you, this is like natural behavior. ये तुम हो, like ये तुम्हारा वजूद है. तो for you, you don't
हैव टू बी लाइक अरे यार आज फिर से एक एपिसोड और फिर से एक गाना लिखना है, अबे क्या कब खत्म होगा ये, कब 100 बनेगा. लाइक you have spring on your feet, and of course there will be days when you don't feel as energetic towards it as you do, but you are at a very different level than most people who are looking at you. And that has happened because you are authentic to yourself. Like you really like doing it. This is you. This is who you truly are. तो उसके लिए डिसिप्लिन सडनली नहीं चाहिए था. बट इफ आई टेल यू अब हर रोज तुम्हें 21 किलोमीटर भागने हैं क्योंकि अगले साल तुम्हें मैराथन की तैयारी करनी है, देन यू विल सक एट इट. आई एम अज्यूमिंग यू डोंट लाइक रनिंग, सॉरी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू डोंट लाइक रनिंग एंड आई सडनली आस्क यू टू रन, you will not be disciplined with it. So the discipline has two forms. One is sticking to the repeatability, and two, realizing that only hard work and that repeatability over time will give you results. You can't teach the latter, क्योंकि एक 12 साल एक 20 साल के इंसान को ये बताना कि जब तुम 10 साल तक कुछ करोगे तो तुम बहुत रॉकस्टार बन जाओगे इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने 10 साल अभी तक ज़िंदगी के कॉम्प्रहेंड भी नहीं किए हैं क्या होता है. तुम बेसिकली उनको बोल रहे हो कि अपनी ज़िंदगी का आधा तुम्हें किसी चीज़ को देना पड़ेगा, एंड दे लाइक मैं क्यों दूँ, पागल हो गया, मुझे एक ही साल में वो चीज़ चाहिए. बट यू कैन सर्टनली टीच देम द फर्स्ट कि जो भी करोगे ना बस इसलिए करना क्योंकि तुम वो करना चाहते हो, एंड जितना भी तुम ऑथेंटिक रहोगे उतना ही तुम्हें मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कम ज़रूरत होगी. And that is actually from a different perspective also. Let's say आपने किसी ट्रेंड को फॉलो कर लिया, किसी और आर्टिस्ट को देख के खुद उसमें से इंस्पायर होके वो चीज़ कर ली, चलो समझ लो सक्सेसफुल हो गए, हिट हो गया, वायरल हो गया वीडियो, फिर क्या? फिर किसको कॉपी करोगे? Once you are there, if you don't have your original self, what will be your second step? फिर तो यहाँ पहुँचने के बाद सीधा यहाँ पे ही तो आना है वापस. वैसे क्यों जाना है? उससे अच्छा जो तुम अंदर से निकल रहा है वही चीज़ करो ना. अगर वो सक्सेसफुल होती है तो यू विल बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑनेस्टली, मोर ऑनेस्टली. So it has been a really enriching conversation for us, and मैं तो अभी भी थोड़ा शुगर रश वाला फीलिंग नहीं होता है, उसमें ही थोड़ा जी रहा हूँ अभी भी कि चल रहा है. एंड ट्रस्ट मी वी वर रियली नर्वस इन द सेंस कि इतने टाइम में कर पाएंगे क्रैक, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं. We usually meet people, and whenever you meet people, the synergies are different, the energy is different, environment is different. So we were very nervous कि क्रैक तो हो जाएगा ना भाई. कि हम लोग ने तो इनफैक्ट ये भी डिस्कस किया था कि भाई कुछ सोच के रखते हैं, अगर नहीं क्रैक हुआ तो वो एक बार बजा देंगे, शायद बन जाएगा. But we couldn't be dishonest with ourselves, and we thought कि नहीं यार ठीक है, backup is fine, but we have to try to crack it on our own. भले it was the fastest we have cracked the fastest actually. We never thought कि इतना जल्दी हो जाएगा. Usually we take 30-40 minutes minimum to crack the hook or title with 1 or 2 takes. No, it was really fast. Yeah, it sounded like you guys are on a different high altogether. actually we are. And so on the closing question, I just want to ask ki, how do you find the question that we started this entire podcast with, which is how do you find balance between a very informative, a supremely aggressively informative world and silence within you? How do you find the balance? That's a terrific question, yaar. The only way to do that, in my opinion, which works for me, is you start with yourself and then you attend to the world. It can't be the other way around. So, a good parallel of that is the finance world. जब हमें सैलरी मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले सैलरी में से अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, सारे टैक्सेस निकाल देते हैं, सब कुछ खर्चे निकाल देते हैं, फिर जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट करते हैं. एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि पहले सरकार टैक्स ले लो, फिर मेरा बैंक मेरी EMI ले लो, फिर मेरा Amazon, फ्लिपकार्ट, एप्पल, एंड्रॉयड मेरा फ़ोन ले लो, गाड़ी का ये ले लो, कपड़े ले लो, वो कर लो, और जब पूरी दुनिया को सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ करूँगा. एंड इनवेरिएबली बिकॉज ऑफ दैट यू विल सफ़र. So the same thing applies to spending time with yourself as well. If you don't start the day by spending time with yourself, then you will always say, जब दुनिया से मुझे छुट्टी मिल जाएगी तब मैं अपने साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन दुनिया से कभी छुट्टी मिलेगी नहीं.
And that's why I would say always start with yourself. Like when you wake up, don't pick up your phone, because the minute you're picking up your phone, you're not doing anything for yourself. You are pandering to what the world is wanting you to react to, whether it's news, whether it's reactions, whether it's comments, it's likes, it's follows, whatever the case is. Just spend time with yourself, and that is the only way that I would do it. Thank you so much, Ankur, and we're really grateful for this. And I'm sure we're going to be grateful for this entire week, in fact, month. I till probably the- might throw up after this. till the time this song comes out. And this is going to be actually a very special song for us, because we are going to make it the song number 25. 25% of our journey is going to end with your song. Is going So to it's get silver completed. jubilee for us. It's silver. You are the silver jubilee for us. So thank you so much. That's awesome. And I'm sure that I will be able to share the song very soon, and I want to see your reaction very soon on that. But thank you so I much. would love to Sorry hear for it, my yeah. bad internet, and Thank you. thank you so much for your enlightenment. Awesome. All the best, man. Thank you so much. Take care, Rutul. Bye bye. Thank you.